friends, welcome to Leadership and Entrepreneurship Insights. I am Basesh Gala from 39 Solutions, and as a leadership coach, as a business mentor, it is our absolute pleasure to do this series every single day. So thank you so much, and today I'm going to invite a very special guest, and I think she will be ready in a second. And that special guest works in the event industry. She's an extremely dynamic entrepreneur. So before I invite her, I would like to say a quote for today, and that quote talks about a lot of discipline and a lot of hard work. And especially on Instagram, I see a lot of youth asking me a lot of questions that हम overnight success कैसे बन जाए, हम overnight stars कैसे बन जाए. But behind every overnight success, I always say this: there's a lot of blood, sweat, and tears. And there is no glory in practice. There is no glory in practice, but without practice, there will never be any glory. So you have to keep struggling hard. You have to keep working extremely hard and keep struggling. So I'm going to invite a very special friend of mine, a very special guest, an extremely well-known name, and I think that person. And we are waiting for her to join us. Hello, Rita Bhai. Please, I've sent you an invite. Yes, and I think she's accepted it. And we have Miss Rita Haria with us. Welcome, Rita Bhai. Welcome to Leadership and Hi. Entrepreneurship. Yes. Yeah. Thank you. Thank you Yes. so much. Thanks for So inviting me. it's my pleasure. And Rita ji का मैं थोड़ा introduction दे देता हूँ. I just introduce Rita Bhai. She is the queen of entertainment, extremely famous in the Jain, Kutchi, Gujarati, Marwadi community, and now becoming a national and international star. And I have a lot of personal relationship with Rita Bhai in the sense that in 2006, my sister's marriage was coordinated and arranged and led by Rita Haria, and my own marriage in 2013. In the entire wedding planning, there was a big contribution of Rita Bhai and Sparkle Entertainment. So Rita Bhai, you have been doing this since a lot of years. I'll ask you a lot of questions, and I request the audience also to ask us any questions regarding Rita Bhai, Sparkle Entertainment, about event industry. So Rita Bhai, the first question from my side is, how was your journey? How did you end up in event and wedding management? Yeah, the journey is always very beautiful. When I was small, I always had the passion of speaking on stage, holding mic in my hand. So I used to take part in my school elocution competitions, although I never won, but I never lost my courage, and I kept on doing that. Then, like in community-based events, we always have so many performances. So people लोग सुने कि ना सुने पर मैं तो जाके माइक पकड़ लेती थी और बोलती थी तो वहां से जर्नी की शुरुआत हुई then there was a family event, my sister's engagement was there, and then my mom made a script and she said you're good at talking, so let's do this. So I said why not, and I hosted her engagement in the year 1994 first time. And then one of my father's friends' daughter's wedding, there was Kishore Manraja, and there also I spoke something on mic, and he said, "Wow, you're a great speaker. So why don't you come for my event next day?" So I said, "Why not?" So that was, I think, so 94, 95 only, and then I entered into this industry, live performances, and since then till today, I'm here in front of you. Oh, that's amazing. So yeah, the journey is amazing. Yeah, I met Dr. Vishen Nagra. So I used to go for Bal Dairas, and my parents were always with me. My father used to write script for me, and slowly, I grew. And you have seen my journey. You are the best witness. Yeah. Absolutely. And I'll request all our viewers, if you have any questions regards to event, wedding management, or service in career, Rita Haria is here to answer them. Rita, can you tell me, it seems very nice. Today, a lot of people admire you. They also envy you in a very nice way कि हमें Rita जी जैसा बनना है. But can you walk us through your struggle? Because I'm sure a lot of hard work, blood, sweat has gone. So can you walk us through the struggle of, what you have sacrificed and struggled to reach the level that you are today? So the sacrificing point when you belong to a business family, your every Sunday is sacrificed because your family, like your husband is working or kids are going to school. So they are busy from Monday to Friday, and when the weekend comes, I start working. So the fun is the biggest part of the family life or the togetherness where we have to sacrifice.
Number one. Number two, struggle was a little difficult. Like, although we have good backgrounds and our community is amazing, like we belong to KBO community where people are there to encourage and support you. But still, sometimes people will feel के अरे अभी तो ये छोटी है, अभी यहाँ इसके पास कहाँ इतना एक्सपीरियंस है. तो जो विश्वास गेन करना होता है, जो फेथ लोगों में आपको बनाना होता है, उसमें स्ट्रगल का पार्ट आता ही आता है. So your performance, your dedication, your hard work, everything together brings out those fear factors that like you literally throw away those things from your life. So बहुत डिफिकल्ट था. मतलब एक बार एक बहुत बड़ी हस्ती है जिनको मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड दिया और मैंने कहा आंटी कभी भी कोई काम हो तो मुझे आप जरूर काम देना. तो उन्होंने मेरे सामने ही मेरा कार्ड लिया और ऐसे फाड़ा, चार टुकड़े किए और फेंक दिया. So she said nothing. She just gave me a smile. But then today I feel she's one of my finest mentors, and Oh, she was the one who gave me more courage, to work hard and uh, like come where you are. And of course, like अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, पर आज जहाँ पर भी हैं तो ऐसे गुरुओं की वजह से हैं कि जिनकी वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं. sure. और एक बहुत सुंदर कहावत है that when your haters and detractors become your fans, that is when Hmm. you know that you've reached a level in life. So that How is a real smart. example, Ritaji. Very true. So, Very true. yeah. So audience, if you have any questions, my friends, with regards to weddings or events, please ask us. I am checking your comments in real time. But at the same time, Ritaji, I would like to know what is the most memorable experience. What is something which is very unique done in a wedding or an event, which you would like to share with the audience and viewers. यूनिकनेस आई टेल यू बसेश. आज से अगर 40 साल पहले की बात करो तो अगर सगाई का प्रोग्राम होता था फॉर एग्जाम्पल, तो एक सगाई में कितने सारे रिचुअल्स होते हैं, पर फैमिली मेंबर ही खुद ही कोई ना कोई एंकरिंग कर लेता था. फिर धीरे धीरे मतलब छोटे पैमाने पे होता था, फिर बड़े इवेंट्स होने की शुरुआत हुई तो फैमिली मेंबर ही उसको पूरा स्क्रिप्टिंग करके बोल लेते थे. फिर धीरे धीरे हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के आने की शुरुआत हुई. तो जो एंगेजमेंट में विथ लाइव परफॉर्मेंस, लाइव सिंगिंग एंड पूरो पूरो मतलब every ritual was given a specific song. So I used to write the songs, and used to make four liners, and specific to that time frame only we will perform. So ये सब चीजें हमने बहुत सारी क्रिएट की. तो धीरे 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 करते हुए क्रिएटिविटी एक जहन में आ गई. तो काफी सारी यूनिकनेस. If you give us the event, we will sit with you, we will talk to you, we will understand. Nowadays bride and groom, they have their own specific thoughts, so we will design every event as per the choice of our client. So the best part, I will never forget Kinnari's wedding, Kinnari and Harshal's wedding, in which we had 55 artists. Bashesh, can you believe, like all together 55 on one months. stage? Yeah, and it was just wedding feras. बट वो जो मजा आया ना, वो एक्सपीरियंस था रिहर्सल्स एंड उसके साथ इतने सारे आर्टिस्ट का पूरा कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन. इन दैट हमने गाना नया क्रिएट किया. हर बार मैं कोई ना कोई गाना तो डालती हूँ अपना. तो हमने अपने आप को ही एक थीम सॉन्ग दिया, खुशियों के रंग स्पार्कल के संग झूमे गगन, झूमे संग संग, लाइक पूरी दुनिया हमारे साथ झूमती है जब हम गाने गाते हैं, तो आप हमारे साथ दिल से जुड़ जाते हो. तो ये क्या हमारी जिंदगी का एक मेमोरेबल, या आई विल नेवर फॉरगेट दैट इवेंट इन माय लाइफ. But it is या so amazing. 55 artists on one stage for a wedding. या इतने लोग को या coordinate करना, manage करना यस और हर एक से यस uniqueness निकालना, that requires a lot of leadership, lot of management skills. Rita ji, one question that I want to ask is, any या memorable creativity आप क्या करते हो जिसके कारण memorable है? Because there are many event planners. There are going to be a lot of wedding planners, event coordinators. So आपका या creativity aspect क्या या है? कुछ दो तीन examples और suggestions दे सकते हो? So what we concentrate on is it is not just कि जाओ जाके गाने गा लो या परफॉर्मेंस दे दो और वापस आ जाओ. No. So may it be a condolence meet. I will meet my client personally.
I will understand from them about that person's life story, and I will put songs accordingly. I will speak exactly crisp to that moment, you know. We concentrate on our artists' costumes, their presentation, their performance, not only by playing an instrument, but with expression, how you can connect to the crowd, you know. So, and finest moments, one I missed in my life was Cogen when I went to California in 2018. Basesh, I tell you, that was amazing moment. Like you see all Kachis of USA, you know, meeting, getting together, they work hard. You also work hard with them and you perform for them. And the mayor of San Mateo had come to the event and he just said hi and hello. So I said, no, 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 ye to nahi jamega, sir ji. Like I said, you have to say just two words to us, sir. Number one, ही आयो, and number two, अच्छी जा. तो हमारे कच्ची सब खुश हो जाएंगे. तो तब यू नो एक अंग्रेज ने हमारी कच्ची भाषा बोली और लोगों ने जो तालियां बजाई ना, वो जिंदगी भर याद रहेगा. हम कुछ क्या अलग करके ही आते हैं. या क्या Nice. So, यस. Rita, with this one question, which I know I have been observing you also. Now you're trying to become a national figure. You're almost there. तो अभी आपके विजन क्या है, आपके गोल्स और प्लान्स क्या है, if you want to share with the audience? See, when you have 39 solutions with you, you have Basesh Gala with you have the best plans in your hands because he is going to guide you. Okay, Rita will now do this and you will achieve this. And you know my goals and my dreams that, of course, I love to be with people. I love to be in crowd. पर हाँ, अब मुझे मेरी जो प्रोफाइल है इंस्टा पे या फेसबुक पे, उसके बाजू में एक ब्लू टिक चाहिए सेलिब्रिटी वाला. तो वो तो Oh, आप within दिला ही 12 months, sir. दोगे. Yeah. So yeah, I must tell you one thing, that when you are with 39 solutions, like I know Basesh when he was so small and he had clear vision, clear goals, and his educational background and his maturity. I mean, your maturity, but I'm talking to the crowd right now. I feel we are blessed when you have 39 solutions with you have, I feel you have every solution of your life, professional or personal. Basesh is there with you and everything is sorted. So I don't have to worry. I think so. Basesh knows what is my goal and what I have to do next, right? Thank you so much, and Yes. you are very very smart. आपने आपका गोल्स का प्रेशर मेरे को दे दिया कि ना बस वी हैव टू एग्जीक्यूट एंड हेल्प गोल्स एंड विल बी हैप्पी टू. वी आर मेंटर्स, वी आर Yeah. कोचेस एंड ये हमारा काम है. हमने बहुत जन के लिए किया है, हम करते रहेंगे. तो रीटा बेन, नाउ एनी हट के एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको आपके इंडस्ट्री में थोड़े अतरंगी क्लाइंट्स भी मिलते रहेंगे, वियर्ड क्लाइंट्स भी मिलते रहेंगे. So any funny experience that you would like to share with the audience, because all is not very very happy. Sometimes there are some negative experiences and funny experiences also. So कोई funny experience आप share करना चाहोगे? फनी एक्सपीरियंस तो बहुत नहीं होते हैं बिकॉज हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं. हाँ, पर जब फैमिली मेंबर आते हैं, कभी गाना गाते हैं, तो हम लोग बहुत हंसते हैं. मतलब उन्हें लगता है कि हम बहुत सुर में गा रहे हैं, पर हमें समझना है. तो ऐसा कोई फनी एक्सपीरियंस नहीं रहा है. पर हाँ, बिटर एक्सपीरियंस होते हैं, बट आई ऑलवेज टेक इट एज माई लेसन एंड आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. एंड आई फील क्लाइंट भगवान है. तो अगर वो तुमसे नाराज है, तो fault is in you, find out, and make sure after making that fault also the client is always there for you as a friend, as a family, not as a professional. So Yeah. I don't see any bitter experience. If there is any, then I feel it's my fault and I have to grow more, I have to improve more. So I I, always I look at that way. I love the attitude that client always gives the right feedback. Even if there is some bitter experience, it is an opportunity for us to improve. हमें Yes, इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें yes, इम्प्रूव करना है. आई थिंक ये yes, माइंडसेट एटीट्यूड विल सेपरेट यू फ्रॉम द रेस्ट एंड विल मेक यू yes, कीप ग्रोइंग. आई थिंक ये बहुत सुंदर 100%. लेसन है हम सबके लिए. या और सो वी आर क्लाइंट जब हमारा भला चाहता है तभी हमें हमारे नेगेटिव पॉइंट्स बताएगा. तो श्योर. यस. या या प्लीज सो मूव अहेड. यस, वन क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट इज व्हाई द नेम स्पार्कल एंटरटेनमेंट. है सब क्यों, कुछ स्पेशल रीजन? नो, सो दैट्स बिकॉज ऑफ प्रीतेश माय हस्बैंड, बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड कि कंपनी का नाम तो इंटरनेशनल ही होना चाहिए. तो एंड ही इज ऑलवेज देयर विथ मी, यू नो हिम वेरी वेल. सो
He only found this name Sparkle Entertainment and he said, और मैंने मान लिया, हिंदुस्तानी पत्नी हूँ, पति का तो मान ही लूंगी. क्या बात है. एंड आई नो आपके सक्सेस में प्रीतेश भाई का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है. Yes. इन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, ही सच अ डिफिकल्ट पर्सन कि अगर आप प्रीतेश को मैनेज कर लोगे तो आप कोई भी क्लाइंट को मैनेज कर लोगे. लाइटर नोट. प्रीतेश Yeah. भाई शेयर विद अस ऑन इंस्टाग्राम. सो बट हाउ, सो दिस गिव्स अस इनसाइट. यू आर अ वर्किंग एंटरप्रेन्योर. दिस इज सच एन इंस्पिरेशन. मैं हमेशा लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने वाइफ्स को, मॉम को बिजनेस में कुछ ना कुछ फॉर्म में इन्वॉल्व रखिए. तो हाउ इज द एक्सपीरियंस? आपने ऑलरेडी कहा कि फैमिली में थोड़ा संडे सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बट हाउ डू यू मैनेज सो मेनी हैंड्स? आप लाइक लिटरली आपको घर का ध्यान रख के, पेरेंट्स का ध्यान रख के, सबका ध्यान रखना है. तो हाउ डू यू डू टाइम मैनेजमेंट? उसके ऊपर कुछ टिप्स. Time management is all thanks to my mother-in-law first. At my place, like at my in-laws' place, because my mother-in-law is very active and we have enough staff at home. तो घर का इतना tension तो होता नहीं है. मतलब you don't have to manage many things because when your mother-in-law is helping you as a mother, nothing like it. And my mom and my mother-in-law, they work as a team, you know. Like whenever I am busy, my mother-in-law is busy, my mom is always there for my kids. तो हमने कभी अपने बच्चों को कोई स्टाफ के भरोसे कभी भी नहीं छोड़ा. कोई ना कोई बच्चों के साथ रहा ही है. एंड प्रीतेश इज वेरी गुड, यू नो, लाइक ही कीप्स ऑन हैमरिंग यू दैट ये करना है, ऐसे करना है. तो हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स सी एवरी वुमेन इज ऑलवेज टैलेंटेड टू डू मल्टीटास्किंग वर्क बिकॉज हम किचन भी देखते हैं, हम बच्चे देखते हैं, हम घर को देखते हैं. तो इंडियन वुमेन इज एज इट इज टैलेंटेड. और माई मॉम वॉज वर्किंग वेन आई वॉज स्मॉल. मैंने मेरी मॉम को, हर्षद मेहता की तेजी थी, तो यू नो माई मॉम एंड डैड यूज टू लीव हाउस इन द मॉर्निंग एट 7 एंड कम बैक एट 12 इन द नाइट, और मे बी समटाइम्स तो वो 2-2 दिन घर पे नहीं आते थे, उतना काम करते थे. तो लाइक आई हैव सीन देम वर्किंग ऑलवेज. So they have been my inspiration. And my father-in-law is amazing, Basish. You must meet him. Like he, day one after my marriage, he said, girls are not meant for kitchen. You have to enhance your skills and do work and make money. That's it. Hats off to such a thought process. Yeah, And we have yeah. another star as a viewer. Rinku Nagada has joined us. Oh, And yeah, I I really, just really saw love and adore this. it. And she's Yes. also the queen of exhibitions, and we are having her this Thursday. So Rinku Bain, welcome. हाँ. But Rita ji, now I would want to ask you a little tough questions. कि Yeah. बिजनेस करना अभी के टाइम में अभी टफ होने वाला है. आफ्टर Yes. COVID-19, आफ्टर कोरोना, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? हाउ मच टाइम विल इट टेक for the industry to stabilize, and will the industry change? Will the working parameters, wedding industry change? I don't think so. So yeah, number one, Indians are meant for celebration. हम अपना घर बेच देंगे पर शादियां तो सॉलिड ही बनाएंगे. तो मुझे ये ऐसे लगता है कि ये अभी एक छोटा सा पॉज आया है और हम हिंदुस्तानी हैं. तो हमारे, वी हैव द करेज, वी हैव द ज़ील टू फाइट बैक ऑलवेज. सो मेड बी नेचुरल कैलामिटी या अंग्रेज आए थे हमारे ऊपर, राज करके गए, पर हम खड़े हुए, उठे. और जब नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं तो वेयर वी हैव टू वरी. वी हैव अ ग्रेट फादर, मतलब फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई. और अब हमारे साथ नरेंद्र मोदी है, मुकेश अंबानी है. બધા ગુજરાતીઓ એટલા સોલિડ છે કે આપણે કઈ ટેન્શન કરવાનું છે જ નહીં. So yeah, this is a small pause. I think so within 6 months हम जोरदार शादियां करेंगे. दिसंबर महीना मैं हमारे हर एक आर्टिस्ट को बोलती हूँ जिसका ब्रेड बटर हमारी इंडस्ट्री पे चलता है, मैं उनको बोलती हूँ કોઈ ચિંતા નહીં કરો, બસ આ 6 જ મહિના છે, શાંતિ રાખો, पेशेंस રાખો, આપણે જલસા કરીશું और बहुत धूमधाम से शादियां होने ही वाली. ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं, मेरा अनुभव कहता है. क्या बात है. से भी बसेश, सॉरी, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि विसर्जन के बाद का सर्जन जो होता है ना, वो कभी भी बहुत ही बढ़िया होता है. इट इज ऑलवेज ऑसम. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज कच्छ. After the earthquake, you see the growth of Kutch is so amazing. So I think so we will grow better. I really admire this thought process. और मैं रीटा बेन आपको कहना चाहूंगा, currently we have a lot of viewers. We have viewers from Mauritius who are regularly tuning in. We have viewers from Sri Lanka. I think there's one viewer from Scotland also. So आपने एक इंटरनेशनल ऑडियंस के बीच में गुजराती का गौरव बढ़ा दिया by talking about मोदी, अंबानी, रीटा हरे and बसेश गाला. So that is so awesome. Now one question is, there are a lot of young people seeing, all right?
And any advice to the youngsters, because they are confused now about education, career, skill, business. So in general, जो भी youth देख रहा है, रीटा बेन उनको क्या advice देंगे? एक ही एडवाइस है, एक कपल को फॉलो करो जिंदगी में बस। वो है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। मुकेश अंबानी ने जब 40 years of celebration of Reliance Industries was happening, in his speech he said only one sentence which which is gone in my head and it is going to be there forever, is there is जी no other alternate to hard work to your success story। आज के यंगस्टर्स को काम करने में ही अगर तकलीफ होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो वर्क हार्ड। एंड नीता अंबानी में अपने नॉलेज पार्क में बहुत ही अच्छे से लिखा है। बाकी काफी सारे लोग अपने नाम के नीचे कुछ ना कुछ लिखते हैं, पर नीता अंबानी हैज रिटन सो वेल। हिट हिट हार्ड, बस ये दो चीज करनी है, हिट हार्ड एंड डू हार्ड वर्क। एंड यू आर स्मार्ट, यंगस्टर्स आर सो स्मार्ट, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया है और आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कोई डरने की बात ही नहीं है। क्या बात है. So viewers, if you Yeah. want to ask any questions, we are here. But I really love your advice that work hard, hard work is necessary, hit hard, and talent or smartness already here. When all these three combines, we will get a lot of success. One question Yeah. that people consistently ask is now, do you think the future of international or luxury segment is going to come down permanently? Because you are very very optimistic, but a lot of people that we have spoken to, Rita, when they say कि शादियां होंगी लेकिन शादी में खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे, लग्जरी थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो सेगमेंट में आपका क्या थॉट प्रोसेस है? I think so. People, I mean, समय आने वाला समय ही बताएगा. But what I understand, Indian mindsets, जी because I have been in this industry since more than 25 years. तो कोई भी तकलीफ आई है, जिंदगी रुकी नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ी है। ये जिंदगी का सफर ऐसा है कि जहाँ कभी हार है, कभी जीत है, कभी खुशी है, कभी गम है, पर जब खुशियां मनाने की बात आती है तो एक हिंदुस्तानी उसमें जुड़ ही जाता है। तो आई डोंट सी बिग चेंज। ऑफ कोर्स पीपल आर हैविंग ट्रबल, so may it be some time there will be a small change, but long time में तो हम भूल ही जाते हैं, a human nature, we forget यस and we move लाइक ahead. Yeah, yeah. I would like to tell you, Rita Ben, that this Instagram ये story पे जाएगा in a 24-hour cycle. More than 500 people view this, and then we'll put this on YouTube where another 1,000-2,000 see this in the next 24 hours. So 48-hour cycle Super. में 2,500 plus people आप impact कर रहे हो, और उसके बाद भी ये वीडियो रहेगा तो काफी हजारों तक पहुंचेगा. Can you give us some statistics आपके जर्नी में? जैसे आपने कहा कि आपने 25 साल ये इंडस्ट्री में बिताए. How many weddings, how many artists, कुछ आप और numbers में आप शेयर कर पाएंगे? Numbers are difficult to remember because, almost every Sunday of the year you are working and you're busy. And it's not only weddings, pre-wedding functions and engagement, ring ceremonies, birthday parties, community-based events. Then you do corporates also. So, around the So guys, apologize for the trouble, but it has been a wonderful session so far. और Rita Ben has been very very positive. हम उनको ऐड करेंगे और दो क्वेश्चंस के लिए. So just bear with us. I am just adding her back. But अब तक मैं summarize करूंगा where she said there's a lot of hard work. She is very very inspired by the Ambanis कि hard work and hit hard ये जो मंत्र रखता है वही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है. So Rita Ben, आपके please carry on some numbers and statistics of your life journey. We can hear you now. ओ या नहीं, वो तो याद नहीं है, पर इतना याद है कि एक दिन ऐसा था कि 1 रुपया कमाया था और आज ऐसा दिन है कि आई कैन अर्न 100 रुपीज और 1000 रुपीज। तो वो नंबर्स याद है, पर आई हैव डन एन नंबर ऑफ इवेंट्स, लाइक आई डोंट रिमेम्बर। बट हाँ, मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि मैं आखिरी दम तक मैं काम करती रहूं। मतलब आज मेरे हाथ में माइक की जगह पे झाड़ू है, पर मुझे मेरा माइक और मेरा स्टेज बहुत याद आ रहा है। So So, I am missing it, yeah. and But I if you would work hard, you get. हाँ, absolutely. And Rita Ben has been very very creative. कुछ दिनों से वो अपना लॉक टॉक सीरीज चला रहे हैं, where she is connecting with influential और different people, different personalities, और उनका insights ले रहे हैं. So Rita Ben is always thinking of connecting with people, being with people. So Rita Ben, do you think now event management can also go digital? खास करके corporate से छोटे छोटे events वो digitally हो सकते हैं?
आपको लगता है? Yes, yes. So we are doing lot of events right now digitally online. वाह वाह। Like on Thursday only, I am gathering few artists, and every artist is saying, and we are getting like Sairam Dave, we are getting Prashant Rao, we are getting Manish Joshi, we are getting ओके। Sunil Soni under one roof. So every artist right now, even they want to be active digitally because एक artist अपने art के बिना नहीं रह सकता. और आर्ट के बिना जिंदगी भी इतनी मजेदार नहीं होती. अगर आप एंटरटेन नहीं होगे आज, तो आपको मजा नहीं आएगा. मतलब आज अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, तो हमें मजा आता है, लाइक टाइम निकल जाता है कि घर में बैठे बैठे बोर नहीं होता. तो इसी तरह हमारे साथ भी आपका एक लगाव होता है, आपके साथ हमारा लगाव होता है. तो वी लाइक artist needs audience, audience needs artist. So of course we are going digitally well, and we are developing lot of things, and I am sure that any part of the world you are sitting, and if Basesh calls me and tells me, Rita, you have to do this event and you have to perform online, and I am ready. I am absolutely ready with it. That's Yeah. so amazing. And I know मैं आपको स्टडी कर रहा हूँ, मैं काफी एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी करता हूँ, and I am very very sure that a lot of preparation is happening. I would just like to share my experience that I have spent 0 hours on Netflix, Amazon Prime or television. I am 5 hours every single day. I am doing research, studying everyday books, removing video series, doing my own SEO. So, and I'm preparing for the future. And we are very very, if God is kind and we have a lot of support, we have launched a company on Akshay Tritiya whose already valuation has reached 75 crores in 2 days. So if you work hard and you network very very smartly, you have a lot of opportunities here. So all our viewers, I would want you to say, take what Rita Bene said, that hit hard when you get a chance. Hit the ball out of the park and work very very hard, because every problem has an opportunity, and you always be ready. You never know when opportunity comes. Rita Ben, can you talk us about your habits, your discipline? How do you keep yourself mentally active? आप क्या planning कर रहे हो? Something about your personality. कुछ हटके जो Yeah, जो so about usually my पता नहीं. planning, I we are working hard. हाँ जी. Yeah. Yes. Is my voice clear to you? Yes, yes, please carry on. हाँ. Yeah. Yeah. So I would just say that डिसिप्लिन तो ऐसा है कि अभी घर में कोई स्टाफ नहीं है, तो घर के काम बहुत होते हैं. पर about the future, we are really working hard on how we can be active on line, like digitally हम कैसे grow हो पाए. And of course we have mentors or guidelines like 39 Solutions and Basesh Kala with us, who will life more smoother in our plannings, like मुझे लगता है कि ए फॉर एप्पल मतलब फ्रूटी होता है, पर बसेश एज द आइडिया कि ए फॉर एप्पल आईफोन भी होता है. तो मुझे ऐसे लगता है कि आज के जमाने में आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, पर अगर आपके पास अच्छे मेंटोर्स हैं, विच आई रियली हैव. Few of my clients, few of my friends, they are my great mentors, Bashish, and they have always given me right guidance and how I grow. Like you are one of them, because even for my child when she was going abroad, I was asking you, Bashish, who am karu ke nahi? Shall we go ahead or no? So, yeah, I have few people who are guiding me, and we are working hard right now. We are working more than 14 hours a day, and we are just working on the process that how we can grow. And on Thursday, what show I'm releasing for a particular group, I will share the link with you also. Do watch Absolutely. it, people, and guys, you will see five artists sitting at different place, and they are performing live in front of you, and you can watch them from any part of the world. So all thanks to the technology. Salute to the people who have developed, all these things. Rita ji, how you manage your lockdown period? Okay. Kashyap Kashyap Baua Babu. is Yes. Yeah, you want to answer that question? ठीक है. हाँ. कि आप लॉकडाउन में आपने क्या किया है? Because Okay, Kashyap Singh is the so same industry. Yes. yeah, so Kashyap ji, I have started a Lock Talk show. I am doing few webinars related to music and my work. So we want to be more in teaching also now. We want to share and impart our knowledge with people.
So we are starting. We have done only one webinar, but we are, of course, we got very good and wonderful response. And Lock Talk is super hit. Actually, I wanted to invite Basesh in my Lock Talk, but he said no. You have to come to 39 Solutions. And you can't say no to him because an enterprising boy like Basesh, and my God, your degrees and your education, that fascinates me the most. And I don't know, people know or no, but Basesh is a great astrologer, so that might be a Yeah, secret story. yes, that's a secret. But yeah, yeah, yeah. I am his hardcore fan. So yeah, I am working. I am working almost 6 to 7 hours only and only related to my professional work. So So Kashyap ji, I am really busy. Yeah. that's so awesome. Rita ji, couple of questions regarding this is why should anyone choose Sparkle Entertainment or Rita Haria? रीटा जी में ऐसा क्या खास बात है जो पूरे इंडस्ट्री में नहीं है? आई नो द आंसर बट आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू, द व्यूअर्स वुड लाइक to hear it Yeah, so I call myself entertainment designer, and the reason for that is only one, that I will design every event as per your choice. I will work on it, and even I will give my inputs to your event. For example, me and Sunil Bhai and Gagan Chaturvedi. So Sunil Bhai, Sunil Gala, MD of Navneet Parivar, गगन चतुर्वेदी जो चतुर्वेदी एंड मेहता चतुर्वेदी एंड शाह का जो फर्म है, वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म, लीडिंग फर्म्स इन सीएस ऑफ इंडिया. तो वी वर सिटिंग एंड उनके बेटे और बेटी की शादी की सब बातें हो रही थी. तो देयर वर फ्यू आर्ग्यूमेंट्स एंड देयर वर फ्यू थिंग्स दैट आई वॉज रियली इंसिस्टिंग, नहीं हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए. सो आई रियली टेक इंटरेस्ट इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स विथ माई क्लाइंट. आई सिट विथ देम. आई डोंट बिलीव कि आपने मुझे फोन किया और मुझे इवेंट दे दिया तो काम हो गया. नो. सो आई विल talk to you for 10 times, 20 times. I'll meet you. I never get tired in doing homeworks. I just want the day has to be wow for you, because that day is only one day and one moment for you, and it is going to be memorable for you lifetime. And that memory is only going to give me the next business. So I really work hard on that. And as I said earlier, I create songs. I make sure that my costumes of artists, like for example, if you call us for wedding fairas, my every musician will sit in Pandit, Pandit costume. सो एक बार मुझे क्लाइंट का राजस्थान से फोन आया, मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि वो आपके वो शादी के फेरों में सब पंडित जी आते हैं ना, हमें वो पंडित जी वाला आपका प्रोग्राम करना है. सो आई वाज सरप्राइज्ड, क्या पंडित जी? फिर आई एक्सप्लेन्ड हिम कि सब पंडित नहीं होते हैं, सब आर्टिस्ट होते हैं, पर हाँ हम वो फील देते हैं आपको. तो वी कम अप विथ अ फील, वी विल क्रिएट दैट एटमॉस्फियर दैट कंपल्सरी आप हमारे सामने एक बार तो नजर डाल ही दो. makes sense. Super. Yeah, yeah. Yes. And any tips for especially women entrepreneurs, because you yourself have a successful woman entrepreneur? Any tips, any guidance for women entrepreneurs? Yeah, so every woman has to work. That's the biggest tip for a woman entrepreneur, because nowadays जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल आगे बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, हमें सब कुछ एंजॉय कर लेना है. एक पल में पूरी जिंदगी जी लेनी है. वो है ना, तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा. तो एक पल में हमें पूरी जिंदगी जी लेनी है. तो उसमें मुझे इंडियन कल्चर से एक ही प्रॉब्लम या एक ही ऑब्जेक्शन हमेशा रहा है कि एक हस्बैंड है या एक घर का बेटा है जो कमाता है और 10 लोग खाते हैं, एक घर की औरत है या बहू है जो, या माँ है जो पूरा दिन घर का काम करती है, अपनी कमर तोड़ती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है. दिस इज नॉट डन, नॉट एक्सेप्टेबल. नो. अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का हाथ और साथ मिला के आगे बढ़ना है. तो फॉर एवरी वुमन एंटरप्रेन्योर, प्लीज हैव करेज एंड कॉन्फिडेंस. मूव आउट. घर की चार दीवारों में बंद होकर किटी पार्टीज में जाके जिंदगी को मत संवारो. जिंदगी बहुत ही बढ़िया है. अगर आप बाहर निकलोगे, आप लोगों को मिलोगे और आप अपने आप को संवारोगे. Makeup is not everything, but making up your personality is more important. Yeah. And that will happen only with work. So every woman has to work and have to be an entrepreneur, or maybe a job, a service, whatever, but please work.
I think that was superb insight. So we are going to end this show and we'll request Rita ji if you have any closing comments or last words. But it was a wonderful session और आपने जो last speech दिया था, it was an eye opener. I'm sure इसे हमें सबको शेयर करना चाहिए and we must also give respect and dignity. मैं थोड़ा दो ऐड करूंगा कि if a woman by her own choice wants to be a homemaker, that is still okay, but please give her the respect and dignity कि होम मेकर भी किसी से कम नहीं है. हम होम मेकर्स को, हमारे मदर्स को बहुत इग्नोर करते हैं. सो लेट द वुमन हैव द चॉइस वेदर दे वांट टू वर्क, whether they want to balance or whether they want to stay at home. Let them make a choice, but let us at least respect and acknowledge our partners. और इस पे मैं बहुत जल्द एक वीडियो निकाल रहा हूँ that we don't respect enough women at our homes. और इसके लिए शायद हमारा समाज और देश में भी women का सेफ्टी और रिस्पेक्ट का इश्यूज है. That safety and respect should start at homes, where we start respecting our wives and mothers and our daughters. तब देश में बेटियों बचेगी, जब देश में औरतों का और सम्मान बचेगा. That was my last speech. Yes. Rita Ben, your Yeah. last. I would just like to add one thing in this Corona period, which I had read few days back somewhere, कि नेल्सन मंडेला ने 26-27 साल एक जेल की एक कमरे में बिताए. गांधी जी ने कितने सालों तक स्ट्रगल किया और बाद में उन्हें आजादी मिली, पूरे भारत को आजादी मिली. So I would just like to tell all 39 Solutions and Basesh Kala's fans and friends and family, and of course the viewers who are watching our live chat, please make sure that have that patience. अब तो सिर्फ 27 दिन या एक महीना ही हुआ है. अगर हमें और 2-3 महीने रहने पड़े तो we have 39 solutions. Call Basesh Kala, find out the solutions, but do not panic and cooperate your country and save yourself and save others. Thank you so much, Basesh, for having me on this Love Talk with 39 Solutions. It was a great pleasure, and we are so proud of you that you are part of KVO community. And I hope I also grow like you and outreach other communities. I am doing that, but with your support, I will enhance my skills more and more, I'm sure. Thank you so much. Thank you so much. And all our viewers from international, from India, from KVO and others, thank you so much for coming here. If you want any interest in entertainment events, if you're inspired by women entrepreneur, please follow Sparkle Entertainment and Rita Haria. And for business and leadership, follow 39 Solutions and Basesh Gala. With this, I end my show. Rita Ben, thank you so much. Thank you all our viewers. And if you have any questions, you can directly message us. We will be sure to reply to you. Please stay safe, stay kind. Jai Hind. Bye-bye. Good night. Bye, Jai Hind. Thank you.